The last he regards as the most insidious temptation of all, the flash to do the right deed. At times like this, when faith in everything sane and normal and conventional is upturned by events, one is forced to disbelieve prose and escape into the reassurance of poetry. T.S. Eliot was a British poet whose prose read like poetry and whose poetry read like prose. Whoever has read both can never forget either. His play Murder in the Cathedral, 1935, is a morality play, an allegory in which the central figure is the Catholic martyr Thomas Becket. In 1162 AD, Becket was selected by King Henry II to become the Archbishop of Canterbury. Henry and Becket had been close friends, and when King Henry appointed Becket, he hoped that his former friend would behave as a loyal servant of the crown. However, to Henry's chagrin, Becket regards his spiritual office as Archbishop as outweighing the king's temporal authority, and the two fall out. Any similarity between a former prime minister and his benefactor COS is purely coincidental. Eliot uses the device of four tempters to distract Becket. The first recalls the sybaritic pleasures he shared during his carefree bromance with Henry. The second reminds him of the political power, the punir power, he exercised as Lord Chancellor before becoming Archbishop. The third tries to persuade Becket to stoop to political maneuvering with the nobles against the king. The fourth tempter offers Becket martyrdom. The last he regards as the most insidious temptation of all, the greatest treason / to do the right deed for the wrong reason. Imran Khan's ingenuity in avoiding arrest reminds one of Macavity. Anyone who has been watching the immorality play being performed outside Zaman Park in Lahore and in the judicial courts in Rawalpindi, Islamabad and Lahore must have noticed the parallel between Becket's inexorable steps to martyrdom and the PTI leader Imran Khan's dangerous courtship with it. The Mughal Emperor Aurangzeb once described the internecine struggles for the throne at Delhi as a choice between Takhta, the throne, or the stone slab. He had a point. Modern politics in Pakistan has the same scorpion sting to it. The efforts made by functionaries of the courts to enforce judicial writ and by various tentacles of the federal government and Punjab governments have been thwarted too often and too effectively. Was there heart variance with their lodis? Mr. Khan's ingenuity in avoiding apprehension reminds one of T.S. Eliot's poems, the humorous Macavity, the mystery cat. Its lines read, "There's no one like Macavity, / he's broken every human law, he breaks the laws of gravity, / his powers of levitation would make a fakir stare / and when you reach the scene of the crime / Macavity's not there." Our successors will have good reason to wonder why our current leaders find it so difficult to reconcile to economic realities, and to each other, at this fragile time of national insolvency. The British are now, 3 years after quitting membership of the European Union, voicing regrets over the ill-conceived referendum that has left Great Britain an offshore island off mainland Europe. Within the EU, Britain had a role to play. Outside, it has only itself to play with. Will we too in Pakistan be tempted to hold a referendum, under the false banner of democratic self-expression, on whether our provinces wish to remain together? Or will we, like other countries which suffer similar levels of incompetent governance, muddle through, depending on God's mercy and the shrinking generosity of our friends? Regardless of what the PDM government and its myopic Mr. Magoo finance minister may have us believe, the IMF is not our savior of the first and last resort. Those with a memory will recall that in 1971, we looked towards the United States as just that, with disastrous results and a festering disappointment the pain of which is still felt today. The holy month of Ramazan is upon us. To the pious, it is a month of self-abnegation. To the poor, it is yet another of 365 days of unassuaged hunger. To die of exhaustion in a queue waiting for subsidized atta, as too many have already done, is to suffer martyrdom entirely for the wrong reason. At times like this, one needs to turn again to poetry for solace. Our politicians have no time either for poetry or for prose. They prefer to spout slogans that are inedible. 2 centuries ago, in 1813,
the British romantic Percy Bysshe Shelley wrote as if anticipating our today's power, like a desolating pestilence pollutes whatever it touches. Our politicians may have survived COVID-19. They still suffer from that desolating pestilence. And to those who wield laudis, Shelley addressed these words, and obedience, bane of all genius, freedom, truth makes slaves of men. The writer is an author. Published in Dawn, March 23, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इस तरह के औकात में जब हर माकूल, आम और रिवायती चीज़ पर ईमान वाक़यात की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो इंसान नस्ल से इनकार करने और शायरी की यकीन दहानी में फरार होने पर मजबूर हो जाता है। टी.एस. इलियट एक बरतानवी शायर थे जिनकी नस्ल शायरी की तरह पढ़ती थी और जिनकी शायरी नस्ल की तरह पढ़ती थी। जिसने दोनों को पढ़ा है वो भी कभी नहीं भूल सकता। उनका ड्रामा मर्डर ऑन दी कैथीड्रल 1935 एक इखलाकी ड्रामा है जिसमें मरकजी शख्सियत कैथोलिक शहीद थॉमस बिकेट है। 1162 ईस्वी में बिकेट को किंग हेनरी II ने कैंटरबरी का आर्च बिशप बनने के लिए मुंतखब किया। हेनरी और बिकेट करीबी दोस्त थे और जब किंग हेनरी ने बिकेट को मुकर्रर किया तो उसे उम्मीद थी कि इसका साबिक दोस्त वली अहद के वफादार खादिम की तरह बर्ताव करेगा। ताहम हेनरी की नाराजगी की वजह से बिकेट अपने रूहानी ओहदे को बादशाह के आर्जी इख्तियार से तजावुज करने के तौर पर आर्च बिशप समझता है और दोनों अलग हो जाते हैं। एक साबिक वजीर आज़म और उनके मोहसिन आर्मी चीफ के दरमियान कोई मुमासलत महज इत्तफाक है। इलियट बिकेट का ध्यान हटाने के लिए 4 लालच देने वालों का आला इस्तेमाल करता है। पहले में हेनरी के साथ अपने लापरवाह रोमांस के दौरान शेयर की जाने वाली सबरितुक लज्जतों को याद किया गया है। दूसरा उन्हें इस सियासी ताकत की याद दिलाता है जो उन्होंने आर्च बिशप बनने से पहले लॉर्ड चांसलर की हैसियत से इस्तेमाल की थी। तीसरा बिकेट को बादशाह के खिलाफ उमरा के साथ सियासी झगड़े पर आमादा करने की कोशिश करता है। चौथा लालच देने वाला बिकेट की शहादत पेश करता है। आखिरी चीज को वो सबसे ज्यादा मकरूह फितना करार देता है, सबसे बड़ी गद्दारी गलत वजह से सही काम करना। गिरफ्तारी से बचने में इमरान खान की चालाकी मिकावटी की याद दिलाती है। जो कोई भी लाहौर के ज़मान पार्क के बाहर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की अदालती अदालतों में होने वाले बदअखलाकी के खेल को देख रहा है, उसने बिकेट के शहादत के नाकाबिल यकीन इक़दामात और उसके साथ पीटीआई के रहनुमा इमरान खान की खतरनाक दोस्ती के दरमियान मुमासलत को ज़रूर महसूस किया होगा। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने एक बार दिल्ली में तख्त के हुसूल के लिए दाखिली जिदोजहद को तख्त में से किसी एक का इंतखाब करार दिया था। इसके पास एक नुक्ता था। पाकिस्तान की जदीद सियासत में भी वही बिच्छू का डंक है। अदालती रट के नफाज के लिए अदालतों के अहलकारों और वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ हथकंडों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को अक्सर और बहुत मुअस्सिर तरीके से नाकाम बनाया गया है। क्या उनका दिल उनकी लाठियों से मुख्तलिफ था? अंदेशों से बचने में खान की महारत टी.एस. इलियट की नज़मों की याद दिलाती है। ये मिजाहिया मिकावटी दी पुरस्रार कैट। इसकी सत्रों में लिखा था, मिकावटी जैसा कोई नहीं है। इसने हर इंसानी कानून को तोड़ा है, वो कशिश शक्ल के कवानीन को तोड़ता है। इसकी ताकत फकीर को घूरने पर मजबूर कर देती है। और जब आप जुर्म के मकाम पर पहुंचते हैं तो मिकावटी वहां नहीं होता है। हमारे जानशीनों के पास ये सोचने की अच्छी वजह होगी कि कौमी दिवालियापन के इस नाजुक वक्त में हमारे मौजूदा रहनुमाओं को माशी हकायक और एक दूसरे से हम आहंग होना इतना मुश्किल क्यों लगता है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत छोड़ने के 3 साल बाद बरतानिया अब इस रेफरेंडम पर अफसोस का इजहार कर रहा है, जिसकी वजह से बरतानिया यूरोप से दूर एक ऑफशोर जजीरा बन गया है। यूरोपीय यूनियन के अंदर बरतानिया को एक किरदार अदा करना था, बाहर इसके पास सिर्फ खेलने के लिए है। क्या हम भी पाकिस्तान में जमहूरी इजहार राय के झूठे झंडे तले रेफरेंडम कराने पर आमादा होंगे कि आया हमारे सूबे एक साथ रहना चाहते हैं? हम भी दूसरे ममालिक की तरह जो इसी तरह की नाअहल हुक्मरानी का सामना कर रहे हैं, खुदा की रहमत और अपने दोस्तों की सुकड़ती हुई सखावत पर मुनहसर है।
इससे कत नज़र के PDM की हुकूमत और उसके वजीर खजाना हमें क्या यकीन दिलाते हैं, IMF हमारा पहला और आखिरी रास्ता नहीं है। याद रखने वालों को याद होगा कि 1971 में हमने अमेरिका को इसी तरह देखा था, जिसके तबाहकुन नताइज और मायूसी थी, जिसका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजर चुका है। परहेज़गारों के लिए यह खुदकशी का महीना है। गरीबों के लिए 365 दिनों की भूख का एक और दिन है। सब्सिडी वाले आटे के इंतजार में कतार में थकावट से मरना, जैसा कि बहुत से लोग पहले ही कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर गलत वजह से शहादत का सामना करना है। इस तरह के औकात में तसल्ली के लिए शायरी की तरफ दोबारा रुजू करने की ज़रूरत होती है। हमारे सियासतदानों के पास ना तो शायरी के लिए वक्त है और ना ही नस्ल के लिए। वो ऐसे नारे लगाने को तरजीह देते हैं जो नाकाबिल इस्तेमाल हों। 2 सदियां पहले 1813 अशारिया में बरतानवी रोमानवी शख्सियत पर बीशे शैली ने लिखा था, जैसे कि वो हमारे आज के हालात का अंदाजा लगा रहे हों। ताकत एक वीरान वबाई मर्ज की तरह जिस चीज को छूती है इसे आलूदा कर देती है। हमारे सियासतदान कोविड-19 से बच गए होंगे। वो अब भी इस वीरान वबाई मर्ज का शिकार हैं। और लाठियां चलाने वालों को शैली ने इन अल्फाज से मुखातिब किया और फरमाबरदारी, तमाम जहानत पर लानत, आज़ादी, सच्चाई / लोगों का गुलाम बनाता है। मुसन्निफ एक मुसन्निफ है। अखज़ शदा बतारीख 30 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.